हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट बडीज। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज़ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। एंड टुडे, in order to share some important knowledge with you, we have Nalini with us. Hello Nalini, welcome to Placement Buddies. Hi, Saleh, and it is great that I have been invited to this, and I have been discussing about the field which I am working from last 2 years. So it will be great journey from now till 60 minutes or 1 hour, whatever we will be discussing about. Exactly. So Nalini, I believe you are the most perfect person to discuss regarding data science and data analytics. People, everybody in NIT Agartala knows about your achievements in data science. हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ पहले. Okay, so I started my journey in data science. I was very curious, but since everyone knows data science is a very vast field, so I always have a target to achieve that field. But in the process, I came to know about very different profiles like business analysts, data analysts. So I started working on them around 2019. I started working on them because we had our placements in 2021 and 2022. So while working for this, I worked as an intern as a data analyst in a startup. Then I had the opportunity to work in data science intern in SIDAC Bengaluru, which is a government organization. Yeah. So I was being interned for 6 months where I came to know about different deep learning techniques. And after that, when we sat for placements and I got placed in Trends Analytics as a business analyst role for my first job offer. Then for the second job offer, I was offered in Fractal Analytics, which is one of the AI based firm. Right. And then in my third offer, I got placed in Snapdeal again as a data analyst intern. Right. So guys, let me tell you, Nalini is having 3 offers right now in her hand. And apart from being such a bright student, she is also one of our placement representatives from NIT Agartala's placement cell. So first of all, congratulations to you, Nalini, for your hat trick of offers. And I believe आज जो information तुम हमारे audience के साथ share करने वाले हो, that is going to be very helpful for everybody. Thank you so much. So Nalini, let us start then. So to start with, let me ask you, like those who are a newbie, you can say in this field, for them, what is data analytics or what is data science according to you? So I mentioned in my introduction also, data science is a very vast field, which involves a lot of knowledge and lot of experience, because people working as a fresher and as a newbie starts their journey as a data science. Data science is something which drives the whole world right now. It is almost in every field. But when it comes to data analytics, I can say it is one of the subset of data science. So the subset means that when we start with something, suppose we are actually everything starts with a problem for which exists in the society. Suppose we have a problem like earlier when we used to go out for playing football, crickets, and suppose we want some indoor games. So everything is ultimately based on some kind of problems which we are addressing for the society and which requires technology. Right. So for that technology, data science comes into the picture, where we actually think of a problem. Everything starts with an unstructured problem. Then with the unstructured problem, we start with collecting the data कि इस पे पहले कोई वर्क हुआ है या नहीं हुआ है. एंड जब हम एनालाइज करते हैं कि हाँ, अगर पास्ट में ऐसा कोई वर्क हुआ है तो कैसा हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके आउटपुट्स क्या आए, जब ये सब चीजें हम एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि हम अपने में क्या क्या सुधार ला सकते हैं और क्या नया दे सकते हैं. तो जब हम ये सोचते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, वो बेसिकली हम एनालाइज करते हैं. So people mostly get confused about analysis and analytics. Right. This is also a very two different terms. So analysis is basically analyzing the past and making certain trend out of it. कि past में ये particular problem को लेके ये चीजें address हुई, ये चीजें follow up हुई. But हम जब analytics में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसका future prospect क्या हो सकता है, trends पे basis पे. Right. So definitely data science is a subset of data analytics. Not data science. Data analytics is a subset of data science. Yeah. Right. So Nalini, like campus recruitment में companies आती है, you know, they will offer you roles in IT domain, they will offer you roles in code domain. But why should anybody choose data analytics, or the companies having some sort of role in data analytics? Data analytics का क्या ऐसा scene है जिसकी वजह से बच्चे data analytics के लिए prepare करे over IT और core companies actually?
आई थिंक यू ऑल्सो अग्री विद दिस. जब हम हमारे कॉलेज टाइम पे होंगे, वी ऑल्सो न्यू ओनली टू थिंग्स. व्हेन आई केम टू कॉलेज आई न्यू अबाउट टू थिंग्स, या तो कंपनी आईटी की आएगी या तो कोर की आएगी. राइट. सो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. हम आईटी को सोच करके सीधा सोचते हैं यार सी प्लस प्लस सीख ले, जावा सीख ले या सी सीख ले. हम ये नहीं सोचते ना कि देर इज सम वेरी डिफरेंट फील्ड लाइक अ डेटा एनालिटिक्स, लाइक कंसल्टिंग. दीज थिंग्स ऑल्सो कम इन टू पिक्चर. So students, and this is a very versatile field because they don't require any particular specialization for it. Right. They are versatile with all the branches, whether it is circuital, whether it's a CSE, or whether it's a non-core branch, non-core and core branches. So these things are something which is versatile in nature, because अगर मैं अपनी production की बात करूँ तो we generate a quality का data. Quality engineering, we have a subject, so we generate a certain amount of data and we measure the performance of a particular machine. We measure the machining MRR, that is the machining rate. So हम ये सब चीजों पे जब एनालाइज करते हैं तो हम उसके लिए भी डेटा कलेक्ट करते हैं और उसपे भी एक एनालाइजेशन करते हैं. और सबसे छोटा जो सॉफ्टवेयर टूल है जो हम यूज करते हैं, दैट इज एक्सेल. That is almost everyone use for analyzation. हम उस पे भी visualization करते हैं, उस पे भी analysis करते हैं. But when we take into a bigger picture, we use certain softwares for it. We use certain programming languages for it. And फिर हम वहां से head on करते हैं एक particular problem की तरफ. फिर वो एक data science का problem हो जाता है जिसमें certain algorithms आ जाते हैं. तो companies जो है mostly प्रिफर नहीं करती है फ्रेशर्स को फॉर डेटा साइंस रोल, बिकॉज इट इज अ बिग रोल. यू विल बी कॉल्ड एज डेटा साइंटिस्ट, विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिग्री एंड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियल टाइम एक्सपीरियंस. बट हाँ, कंपनी हायर करती है एज अ एनालिस्ट. इवन द कंपनी लाइक Capgemini hires for senior analyst role. So company comes and they hire for this role, and very big analytic firms like I can say Fractal, even Snapdeal or Flipkart, even Amazon, these company, even Jivami hires for these roles. So every company needs an analyst because वहां पर एक इंसान का analytical skills तो use होता ही होता है, plus एक इंसान का decision making power which need to be very data driven. Exactly. So it helps in business development. So yes, companies do visit for this role. Yes. So the companies which visits NIT Agartala, or you can say other NITs, वो किस टाइप की roles provide करते हैं freshers को, and what are the responsibilities basically? Okay, so let's take an example of Fractal. Fractal offers a role of Imagineer, ठीक है, in starting. So in Imagineer, I read the job description. So there was written about different roles like data engineering, data analyst, consultant. So based on my training and my knowledge, they'll definitely shift me to certain alignments, certain divisions. So कुछ companies तो एकदम totally data driven आती है. जैसे I remember ADP comes straightly for data analyst role. ठीक है. एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू लुक फॉर ऑफ कैंपस ऑफर्स, इफ यू लुक फॉर लिंक्डइन वेरी नाइसली, दे टेक एज अ बिजनेस एनालिस्ट बिकॉज दे वांट सम स्पार्क इन यू. Your communication, business analyst becomes a non-technical role, but data analyst is a technical role. So yes, students who are from engineering background can definitely pitch for this role. Yeah. So what type of skills do any particular student need for preparing? जैसे हम लोग का ये होता है ना कि if I am pursuing a career in IT field, student will start preparing programming languages, C++, then he or she will go for data structures. तो analytics में, data analytics में, या for being a business analyst, what things student can prepare, and what should be the ideal roadmap for that? Okay, this is a quite a good question I would say, because यहाँ से आप डिसाइड करते हो कि आपको फ्यूचर में डेटा साइंस, अगर आप डिग्री एज अ परस्यू करना चाहते हो, PhD या फिर मास्टर्स, सो आप यहाँ से एक्चुअली डिसाइड कर सकते हो. तो आई हैड दिस विजन दैट आई विल गो फॉर रिसर्च इन फॉरेन यूनिवर्सिटी और इन एनी ऑफ द गुड इंडियन यूनिवर्सिटीज. सो आई हैड दिस विजन ऑफ बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट. सो विद दिस विजन आई स्टार्टेड. So पहला चीज तो है कि if you start something, half of thing is finished over there. Right. So start researching. I would say all the young people to start doing research, because certain skills to बहुत defined है, like Excel is defined, SQL is defined, Python is defined, R is defined. So these things are particularly defined, but actually implementation, because जब मैंने SQL सीखा था, मतलब मैंने basics कर लिया, फिर advanced कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, बट व्हेन मतलब इसको यूज कैसे करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स,
So I would suggest if any fresher wants to start this, they should start with SQL first, because SQL is like a salt which goes into all profile. Whether you're preparing for SDE also, they'll ask questions about SQL. Right. They'll ask questions about databases. So SQL is very important, structured query language. And related to structured query language, we will use this in certain databases. We will come to know about different databases like MySQL, Oracle has a database, IBM2 has a database. So this, and after SQL, Python is very important for a beginner, because Python is something which is a very strong language which helps in data visualization, data analysis. So it is very important. And thirdly, I will say that if a knowledge of databases, like how the databases are actually managed, what is relational databases, what is ऑपरेटिंग सिस्टम, सम नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमारा सिस्टम जिसपे हम काम कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कैसा इन्वायरमेंट है, क्या है. तो लिटिल बिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड आई विल से वन मोर थिंग, इफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर पाइथन, so they should keep in mind that it is a object oriented programming language. So one should always prepare with that point of view कि मेरा C++ का जो हम तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं Python से भी हो जाएगा, because it is also including the OOPS concept. तो अगर इंटरव्यूअर OOPS के concept पूछता है तो you should be well aware of it, because you have gained the knowledge of Python. So it is very important. So yeah, these three are the prime thing which any fresher or newbie can start with. Right. So when did you start actually preparing for such kind of companies, or learning this type of technologies, and what was your source of preparation basically? Okay, so like any first year student, I was also very confused. Like I have production engineering as my branch, and in my branch, mostly seniors used to tell that they will go for automobile or they'll go for manufacturing companies. But I was not interested in it. So for me, it was very challenging. So I started with my subject, that was quality management. I was very inspired with Toyota production system, how they worked with the little lead time and produced the tremendous result and capture the almost whole automobile market. So I thought if there is such a concept where we do forecasting models, where we predict forecasting models on Excel, there must be some wider picture of it on a wider level. Right. So I started exploring this field, data science field, and I would say this is a very vast field. Like मैं अभी 22 की हूँ, it will take me more 10 years to actually be half of the data scientist. Obviously, yeah. So I started with this around 2019 when I was in my second year. Almost my second year was over. We all came to home at lockdown. So I had this vision from before lockdown only that I will prepare for these companies. I was clear in my second year. So it is very important for a fresher who is starting that second year में आप clear हो जाओ कि आपको prepare करना है, because it's a high time. So I started preparing in my second year. By the end of the second year, I started learning the different concepts. I started with SQL. I have taken guidance from my senior. Many seniors guided me. That was very, I will be really thankful to them. So I started with SQL. Very first thing was SQL. Then I started to understand what are databases, how actually the databases work. Then I started with Python. And after, as I said, Python is an object-oriented programming language. So we have 4 different concepts in OOPS. So मेरी कोई एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि अगर तू Python जानती है तो वो तुझसे कैसे नहीं पूछेगा OOPS के क्वेश्चन. वो बोलेगा it is also object-oriented programming language. So it was a triggering question for me कि हाँ यार ये तो है. I can't say that I used Python only for data analytics and data science projects. It is a very lame thing. If you are going prepared, you should go prepared fully. Right. So I started with OOPS concept also. क्योंकि OOPS concept basically abstraction या encapsulation जैसे concept, it's a concept. And programming language is a way to communicate with computer, with a machine. So I started with this concept. After doing SQL and Python, I moved towards the projects, certain projects which are freely available on YouTube also. So I moved to the projects. I started with analysis project. I performed certain EDA part, exploratory data analysis. I still remember my first problem was the bike problem, bike rental problem. And definitely Kaggle is one of the best source to get the free data. Free Excel data you can get over there. You can analyze those data. You can predict certain trends, and you can actually come to know what is seasonal trends, what is showing them some absurd trend, or whether the noise is there in the data or not. There is certain analysis and certain resources available on net which is easily available.
आफ्टर दैट आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर इंटर्नशिप व्हेन आफ्टर जब मेरा थर्ड ईयर का एक सेमेस्टर पूरा बीत गया. सो जब मैं थर्ड ईयर के दूसरे सेमेस्टर में जाने वाली थी, आई गेस फिफ्थ से सिक्स्थ में जाने वाली थी. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंटर्नशिप. आई गॉट वन इंटर्नशिप इन डेटा एज अ डेटा एनालिस्ट, एंड वहां पर मुझे ज्यादा काम नहीं दिया गया. आई वॉज गिवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क विद अ यूनिवेरिएट डेटा सीरीज, जहां सिर्फ एक कॉलम होता था और वो पर्टिकुलरली एक्स इज इक्वल टू वाई को इफेक्ट करता था. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट, एंड जब मैं इस पे वर्क करना शुरू की तो मुझे धीरे धीरे और भी चीजें पता चलने लगी. People should do internship because it gives you experience. So like this I have grown with every time learning, and I'm still learning. Tomorrow I'll have a new journey, so I'll again learn more about this, but definitely start with SQL, Python, OOPS concept, तो समझने में easy हो जाएगा. Right. And what do you think, how is artificial intelligence, machine learning and deep learning related to data science and data analytics? Okay, so I can say, like when I started learning, there are many Udemy courses available on internet which were free of cost. तो वो लोग सबसे पहले इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि हाउ AI, हाउ ML एंड हाउ DL इज रिलेटेड. सो AI इज लाइक अ बड़ी मछली पूरे समुद्र में, एंड ML इज लाइक द छोटी मछली, एंड DL इज लाइक उससे छोटी मछली. सो व्हेन आई ऑलवेज सेड एवरीथिंग व्हिच कम्स इनटू, ये हम एक्शंस लेते हैं प्रॉब्लम के खिलाफ. तो सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आती है, सपोज अ प्रॉब्लम ऑफ रोड पे गड्ढे हैं. अब गड्ढों को डिटेक्ट करने का प्रॉब्लम, कैसे डिटेक्ट करेंगे? अब उसके लिए वी विल यूज टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजी में देयर इज सर्टेन लिमिटेशन, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स. एक टाइम था जब DL बहुत फेमस था, फिर उसके बाद DL का पिक्चर फिर आया 2009 के बाद, और फिर से DL आने लगा पिक्चर में. इट इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, डीप लर्निंग, बिकॉज इट वर्क्स ऑन डिफरेंट एरियाज. लाइक हमारा जो नेटफ्लिक्स है या हमारा जो Amazon है, बैक रिकमेंडेशन सिस्टम, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस. So people who are starting with data science will come with this question only. A basic understanding is important that these three are very much different with each other, and machine learning is something which involves certain statistical approach, certain algorithms involved in it, which helps in taking decision making furthermore in a better and appropriate way, and delivering the solution also to the problem. So machine learning is this, but when we come to deep learning, there are certain data which is available in the form of images, which is available in the form of voices. So हम वहां पर ही एक थोड़ा और डिफिकल्ट एल्गोरिथम लगाते हैं जो कि डीप लर्निंग हमें प्रोवाइड करता है. There comes the picture of neural networks, which is a very vast concept, and almost all the engineering disciplines work in this area. So it is something जो धीरे धीरे टफ होता जाता है जर्नी में, लेकिन हम अपने आप को खुद को रेडी कर लेते हैं कि हम सारे टफ बैटल्स को लड़ पाए. Right. So for these things, I would say that when you start with data analytics, you remember one thing for sure, that now you are analyzing the trend, you are making some vivid, strong decision about the data. You have certain data related to time series or any kind of data. You're making a very vivid like decision about the data, and when you make a certain decision about that data, you actually think कि अब इस data को कैसे implement करना है हमारे problems में. So there comes the picture of machine learning models. वहां पे हम models सोचते हैं. Like I would like to mention about my last project where I was working with sound data. So I had to build a system which is speech to text model. So मेरे को तो सीधा एक problem statement पकड़ा दिया गया कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो text में आ जाना चाहिए. तो मेरे को लगा यार ये तो कितना easy है, हम तो phone पे कर लेते हैं. But when I get deeper into it, I came to know many things like sound में mono channels क्या होते हैं, stereo channels क्या होते हैं. Sound के लिए हम एक अलग library use करते हैं उस type के data को analysis करने के लिए, which is a Librosa library. Okay. How we convert these stereo channels to mono channels, उसके लिए मुझे उन लोगों ने एक अलग open source software provide किया जहाँ मैंने convert किया इन चीजों को. फिर जब मैंने इतना data pre-process कर लिया 3 महीने तक, वहां तक मेरा data analytics का ही रोल था. मैंने pre-processing किया सिर्फ data को. जब pre-process हो गया data, हर data एक सिंबल आ गया, क्योंकि वी हैव टू ट्रेन मशीन इज नॉट गोइंग टू डू आवर वर्क, वी ह्यूमंस हैव टू ओनली डू आवर वर्क, बट वी हैव टू एक्चुअली ट्रेन आवर मशीन्स विच विल परफॉर्म आवर टास्क. सो वहां पर जब मैंने हर जो साउंड है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि मेरा नाम नलिनी है, तो ये रिटन ट्रांसक्रिप्शन में मुझे मशीन को ट्रेन करना पड़ा कि मेरा नाम नलिनी है. मेरा कैसे प्रोनाउंस है, मेरा ममे ए की मात्रा में, बिकॉज इट वाज ऑन हिंदी स्पीच, सो आई एम टेलिंग दिस. सो मेरा ममे के ए की मात्रा और रा. So
like this a certain speech is produced. जब मैंने उसका speech और labeling कर लिया, this all things involved in data analytics, फिर मेरी टीम ने बोला अच्छा अब मॉडल बिल्ड करना शुरू करते हैं। फिर हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल फिर शुरू किया। फिर मॉडल बिल्डिंग में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे लर्निंग रेट कैसे डिसाइड करना है, इपॉक्स कैसे डिसाइड करना है। तो दीज थिंग्स आर वेरी वास्ट थिंग। आई हैड माई गाइड हु वाज PhD, who was a data scientist, worked in 32 years in single field, so she helped me. So yeah, these three fields are very different. राइट, सो व्हेन इट कम्स टू डेटा हैंडलिंग, हम लोग कभी कभी छोटा डेटा भी हैंडल करते हैं, हम लोग बहुत बड़े डेटास भी हैंडल करते हैं। सो उसके लिए टूल्स भी डिफर करते हैं। कभी कभी व्हेन देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन हैंडल इट बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओनली, बट व्हेन इट कम्स टू बिग डेटा इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, एंड जैसे तुमने बताया मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बारे में। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड बिग डेटा एज दे से? Okay, so up to my understanding, I will try to explain this because I know many people have different definition for it, but there is a very straight line definition to this. Data is something हम उसको बोल सकते हैं कि एक single amount of data, एक single utility of data which can be handled with single machine. Okay. Like as you mentioned also, any data, like now we are communicating, the many datas are also getting generated over here also in the Google's database. Right. So this is also a data. But when we talk about big data, there comes a very important picture which I have come through my studies, 3 V's. That is volume, variety, and one more was velocity. Yeah. But it can be more than 3 V's also. Like what is the value adding to that data? मतलब एक बड़ा data इंक्लूड करता है इमेजेस, पिक्चर्स, एवरीथिंग। मतलब हर फॉर्म, जितना फॉर्म हो सकता है डेटा का उतना फॉर्म। मतलब तुम अगर कल को कोई रिसर्च अगर चल रहा है बिग डेटा पे और वो कल को कोई एक न्यू फॉर्म लेके आ गया तो वो भी बिग डेटा के अंदर आ जाएगा। लाइक अ बड़ी मछली, आई सेड अ बिग फिश, एंड वी कांट एक्चुअली नो कि इस फिश का लेंथ क्या है, लेकिन वी हैव टू हैंडल इट because we know that certain big amount of data is coming to us. एक बड़े firms, if I talk about big tech companies, they generate a large amount of data. And I mentioned about my project now, sound, where I was working on sound data. Yeah. So when I started working earlier, तो मैंने सिर्फ pandas libraries पे work किया था and CSV files and TSV files पे work किया था। यहाँ भी वो चीजें थी, but यहाँ पे sound भी एक data था। Okay. तो मैं जब CSV फाइल्स पे वर्क करती थी, आई हैड ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज और आई हैड ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज अवेलेबल टू मी। सो मैं उतने ही डेटा पे काम करती थी, लाइक 30,000 और 40,000 डेटा मैक्स इट वाज अ मैक्स डेटा आई वाज वर्किंग ऑन। बट व्हेन आई केम हियर, मैं अगर 30,000 डेटा अगर साउंड सिग्नल्स का कलेक्ट करती थी, इट वाज नॉट इनफ फॉर मी टू ब्रिंग गुड रिजल्ट्स। मतलब कहीं ना कहीं बाइसिंग और वेरिएंस आ ही जाता था, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता था। एवरी डे आई यूज्ड टू बी गेट स्कोल्डेड। सो बिग डेटा इन्वॉल्व्स लाइक बिगर पिक्चर में आपका क्या प्रॉब्लम है, इट इन्वॉल्व्स द बिग थिंग हियर। लाइक साउंड डेटा के लिए अगर मुझे स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करना है तो वो बहुत बार मेरा को कुछ और ही कन्वर्ट कर देगा, नमस्कार को नमस्कार कन्वर्ट करा था, बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू वर्नरेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, लाइक हाउ अ पर्सन इज स्पीकिंग। लाइक आई एम फ्रॉम अ नॉर्थ बैकग्राउंड और आई एम फ्रॉम ईस्ट बैकग्राउंड, सपोज यू आर फ्रॉम साउथ बैकग्राउंड, सो हिंदी वेरीज, एक्सेंट के साथ भी हिंदी वेरीज करेगा। तो ये सब वर्नरेबिलिटी मेरे सिस्टम पे इम्पोज्ड है, जो कि वर्क करना है। अगर आगे कोई साइंटिस्ट इस पे वर्क करेगा तो वो और डेटा जनरेट करेगा, तो डेटा बढ़ते ही जाएगा। तो बिग डेटा इज ऑलवेज फॉर मेकिंग योर रिजल्ट मोर परफेक्ट। या एंड जैसे जैसे डेटा बढ़ता है उसका लाइक टूल्स में भी वेरिएशन होता है। जैसे डेटा को हैंडल करने के लिए एक पर्टिकुलर टूल होता है, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए वी नीड मॉडिफाइड टूल्स, राइट? यस यस। So Nalini, what are the parts of data science basically? Okay, so as I mentioned earlier also, that this is a vast field and includes so many things. So when I had this vision of pursuing data science as my career, because मेरे घर पे भी अभी लोग जानते हैं कि I am placed in an analytics firm where they deal with AI and everything. So data science is something which requires the pre-knowledge also. So इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। First, you have a data. First thing, right. Data science में let's go with the data part. What is data? So data, first is data. We define what is data. We collect data in some forms, like in Excel में हमारे पास आया CSV files आई या TSV files आई या sound files आई या image files आई, because nowadays people are working on image processing also. Okay. So these things comes into picture. First is the data. We import that data using certain libraries like pandas or different libraries are there. So if we import these data, after importing these data, we actually see how these data are structured. Basically, data
data are structured in a 3 different manner, where it is unstructured data, structured data and semi-structured data. So in structured data everything is done for us, इसीलिए लोग Kaggle से data उठाते हैं because वहाँ structured data ही मिलता है हमें. It is a very good source. So for any data science fellow, Kaggle is the best platform. It is like a god to them for getting data and to work on them. But अगर जैसे हमारे केस में साउंड डेटा, तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो से स्टार्ट किया था. वहां पर ही नमस्कार दोपहर समाचार में आपका स्वागत है. My guide told me to collect the data from there. But I realized that manually 30,000 data collect करना is like an impossible task. Right. So I need some open source software, because there are students who are working for 1 year, for 1.5 years, maybe for 10 years in this field, and collecting data, refining data more in an appropriate way. Because I remember the algorithm which I used, the sequencing algorithm, it was used by Facebook scientists, developed by Facebook scientists. तो उन लोगों ने डेटा पे ही सिर्फ काम किया था बहुत सालों तक, to actually manage the data in a structured manner, to get appropriate result. Or I know I got my accuracy only 70% in my result, but they produced the accuracy of below 25%. So that was something a big difference. So data plays a very important role जब हम actually data science के तरफ head करते हैं. जब हमारे पास एक data आ जाता है एक structured form में, तब हम pre-processing उसमें करते हैं. Pre-processing involves कि इसमें कोई missing values है या नहीं, इसमें कुछ एब्सर्ड वैल्यूज है या नहीं. अगर कोई मिसिंग वैल्यूज है तो उसको हैंडल कैसे करना है. जब हम एज ए बिगनर होते हैं, तो मेरे को जो यूडेमी कोर्सेज या जो भी मेरे ट्यूटर्स थे या जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने बोला ड्रॉप द वैल्यूज. ड्रॉप द वैल्यूज मीन्स डिलीट द वैल्यूज. बट डिलीटिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन. फिर हम वहां से एक और कंसेप्ट सीखते हैं, इनकोडिंग कंसेप्ट, हॉट इनकोडिंग, कोल्ड इनकोडिंग, दिस कंसेप्ट. और वी फिल द वैल्यूज विथ मीन मीडियन मोड. स्टैटिस्टिक्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो प्री प्रोसेसिंग होता है डेटा का, विच मोस्टली कम्स इन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ये सारी चीजें डेटा एनालिस्ट को ही करना होता है व्हेन यू आर अ जूनियर इन द टीम एज अ डेटा एनालिस्ट. तो वो जब प्री प्रोसेस डेटा को करता है, तो उसको एक पर्टिकुलर ट्रेंड मिलता है कि हाँ ये डेटा ना एक पर्टिकुलर ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा है. अगर टाइम सीरीज डेटा है तो टाइम के साथ ये डेटा कैसे चेंज कर रहा है, नॉइस क्या है डेटा में. सो ये सारी चीजें इनकाउंटर होती है. आफ्टर प्री प्रोसेसिंग द मेन थिंग कम्स कि हाँ अब चलो मेरा डेटा प्री प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया मेरे डेटा में. अब मेरा डेटा एक फुल्ली स्ट्रक्चर्ड है, एंड नाउ आई कैन परफॉर्म ट्रेनिंग ऑन माई डेटा, लाइक ट्रेनिंग माई मशीन कि तुम मेरे डेटा से सीखो. लाइक हाउ अ टीचर डज. टीचर क्या करती है, हमें चीजें पहले पढ़ाती है, फिर हमारा टेस्ट लेती है. तो वो हमारा कैपेबिलिटीज टेस्ट करता है. वी डू सेम थिंग विथ मशीन. इसीलिए मशीन लर्निंग में 3 टाइप की मशीन लर्निंग मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, विच इज अगेन अ वेरी बिग एरिया टू डिस्कस. वन कैन एक्चुअली गो इन पर्टिकुलर एरिया एंड स्टडी. सो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि हमें पहले ट्रेनिंग परफॉर्म करना है, फिर टेस्टिंग परफॉर्म करना है. लेकिन वहां पर फिर चॉइस आ जाता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है. हम इसमें रिग्रेशन कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं. दिस इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर श्योर. लोगों को एक रिग्रेशन, आई स्टिल रिमेंबर माई ट्रेडेंस का इंटरव्यू. That person was a data scientist. He told me, Nalini, you will take almost 10 to 15 years to learn 4 basic algorithms only. To in a perfect manner. I'm not saying that कि हाँ सीख लिया. बहुत लोग बोलते हैं ना मुझे इतने सारे algorithms आते हैं, ये आते हैं. Very good. Exactly. I'm not criticizing them, but it's very good. But if you want to go deep dive into it, it takes time. It is a time consuming process to become a data scientist. So data science is a very vast field, but a very interesting field. डर नहीं जाना है कि data science vast है तो करे ही ना. ये सोच के करना है कि हर एक पर्टिकुलर स्टेज पे आई एम बीइंग ऑफर्ड विद अ सर्टेन रोल एज लाइक, अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एसक्यूएल तक लिमिटेड है तो हम बिजनेस एनालिस्ट में जा सकते हैं. बिजनेस एनालिस्ट में हमारा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, एंड आई नो ओनली एसक्यूएल. एसक्यूएल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एसक्यूएल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेटा को रिट्रीव कैसे करना है, डेटा से बात कैसे करनी है. वो तो एक डेटा है, हमसे बातें कैसे करेंगे. लाइक नाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद आवर माउथ, वी नीड मीडियम. सो माउथ इज आवर मीडियम, आवर वॉइस इज गेटिंग जनरेटेड. तो एसक्यूएल इज समथिंग व्हिच इज नीडेड फॉर, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग विद द डेटा. सो एसक्यूएल तो भाई सब करो ही करो, क्योंकि इट इज अ प्राइम थिंग. उसके बिना कुछ नहीं होगा. एनालिस्ट तो बन ही नहीं सकते उसके बिना. डेफिनेटली हाँ. तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल इज इनफ, बिकॉज वो सिर्फ एसक्यूएल पूछते हैं. इफ यू नो पाइथन इज लाइक आइसिंग ऑन द केक. जैसे एसक्यूएल, एक्सेल हो गया, पाइथन हो गया. So are these things enough for cracking a job in data analytics, or you have to be familiar with 10th or 12th का mathematics जो है, statistics basically, the mean, median, mode and everything, जो data analytics में use होता है, I suppose, right?
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज हम कहीं ना वो कंसेप्ट को भूल जाते हैं। जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे 10-12 में, हम यही सोचते थे यार ये कहाँ यूज होगा, बट आई टोल्ड यू ना हाउ टू हैंडल डेटा। वी फिल इट विथ सर्टेन मीन और सर्टेन मोड पे हम तब फिलिंग करते हैं जब हमारा डेटा एक पर्टिकुलर येस या नो पे रहता है। अगर मैक्सिमम येस है या मैक्सिमम नो है, तब हम मोड का यूज करते हैं कि ज्यादा टाइम क्या आया है, क्योंकि हो सकता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड में वो यूजर का भी येस हो सकता है, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में येस ज्यादा आया है, बिकॉज मोड इज द मोस्ट अकरेंस थिंग, वी कैलकुलेट मोड ऑन दैट। सो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर एन इंजीनियर, डेफिनेटली योर 10th मैथमेटिक्स, योर 12th मैथमेटिक्स, योर फाउंडेशन शुड बी मैथमेटिक्स। So Nalini, what are the libraries which are used in Python? And if you can talk a little about data visualization, and also, what are the libraries of Python which are used for data visualization? Okay, so I told you, like, for importing very famous libraries, pandas is like, हम कितना भी बड़ा कोई ना एल्गोरिथम ना लगा ले, हमको pandas की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। It's like a pinch of salt in every food. So pandas is used for importing data. For data visualization, matplotlib is one of the most powerful tool, which is, or library I would say, which is used for visualizing the data. Mostly data visualization एक ऐसा टेक्निक है कि हम सोचते हैं कि अच्छा, जैसे if we talk about share market, हम एक पर्टिकुलर कंपनी का इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन रेट देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, हम उसका आईआईपी देखना चाहते हैं कि उसने पर्टिकुलर क्लोथिंग सेक्टर में कितना प्रोड्यूस किया और उसका ट्रेंड कैसा रहा। तो हम देखेंगे कि अच्छा, रिलायंस ने ऐसा प्रोड्यूस किया, उसका एक ट्रेंड फॉलो किया कि समर में उसने अपने कॉटन कलेक्शंस के लिए प्रोडक्शन ज्यादा किया। सो वी केम टू नो कि हाँ, समर में इसने कॉटन कलेक्शन का प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा किया कि बिकॉज इस समर है और कॉटन क्लोथ्स आर मोर प्रोन टू गेट सेल्ड। बट जब हम विंटर का देखेंगे तो डेफिनेटली रिलायंस वुड हैव फॉलोड सम डिफरेंट पैटर्न। सो हम नंबर्स के साथ सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ यार, अब वहां पर ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं कि जिसको बहुत इजीली प्रिडिक्ट किया जा सके। समटाइम्स इट इज नॉट नंबर्स, इट इज स्ट्रिंग लिटरल्स। सो हमें डेटा को विजुअलाइज करने के लिए सर्टेन चार्ट्स का यूज करना पड़ता है। चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बार ग्राफ्स, और मैटप्लॉटलिब हमें ऑलमोस्ट सारे चार्ट्स देती है। बट वन ऑल्सो यूजेस द सीबॉन लाइब्रेरीज, क्योंकि वो हमें हीट मैप्स और ये सब से काफी अवेयर करवाती है। हीट मैप इज समथिंग जहाँ पे हम कोरिलेशन बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर हीट मैप वाज समथिंग विच इज वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल, एंड मतलब वो देख के भी बहुत सुंदर लगता है कि हाँ, एंड इट इज सेड ना कि हम विजुअलाइज करके ज्यादा अच्छा से ग्रास्प कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। So yes, data visualization is very important. राइट। सो नलिनी, डैशबोर्ड का क्या रोल है और उसमें से कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूजफुल होते हैं डेटा एनालिटिक्स की प्रिपरेशन में? Okay, so the previous question was about data visualization. So Python, we knew Python, हम Jupyter notebook पे data visualization कर सकते हैं. But जब हम Tableau, suppose a person who is preparing for business analyst, I would like to suggest to them कि वहाँ भी certain case studies उन्हें जब दिया जाता है तो उनसे expect किया जाता है कि उन्हें Tableau आए या उन्हें Power BI आए, and it's not like a software which can be learned in one day. It can be learned in 1 day and 2 days. आप डायरेक्ट उसको सीखो और डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करो, इट मेक्स सेंस। और हमें डैशबोर्ड प्रिपरेशन इसलिए दिया जाता है बिकॉज सर्टेन वैल्यूज जब हम उसमें चेंज करते हैं, आई हैव यूज्ड पावर बीआई, तो मैंने उसमें जब टेम्परेचर साइकिल के लिए निकाला था, तो मैं जैसे ही कोई दूसरी कंट्री का टेम्परेचर डाल रही थी, सर्टेनली मेरा डेटा चेंज हो जा रहा था। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं, एंड द मोर creative representation we have, the more numeric driven representation we have, it makes more sense. Right. बिजनेस एक्यूमेन और मार्केट अंडरस्टैंडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाई डू द स्टूडेंट्स नीड टू हैव सच ग्रिप फॉर डेटा एनालिटिक्स? Okay, so what I have mostly seen, the person, it is a general thing I will suggest to all the person who is sitting for interviews कि आप कंपनी के बारे में पढ़ के जो as a fresher mostly people don't do. In our college also I have seen students, mostly people don't know about the company they sit for. Mostly आधे लोगों को रिलायंस, टाटा के बाद तो कुछ पता ही नहीं होता है। हाँ, डेफिनेटली। So बहुत बार ऐसा होता है ना कि you need to understand what company is actually working on and what market actually company focuses on. So market understanding becomes very important when you enter in your corporate life. So हम सीख गए कि SQL क्या है, हम सीख गए what is Python, हम सीख गए कि Microsoft, even बहुत लोग Microsoft Excel सीख लेते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि हमको इसको रियल टाइम में कैसे लाना है। रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग्स की यहाँ बात हो रही है। यहाँ कंपनी मनी जनरेट ऐसे नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें मनी जनरेट करना है और उन्हें सबको जॉब्स देने हैं। यहाँ पर ही हर चीज, एक कंपनी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो मैंने
जैसे देखा था कि ट्रेडेंस केस स्टडीज सॉल्व करती है, तो वो केस स्टडीज इसलिए नहीं सॉल्व करती है बिकॉज उनको मतलब बच्चों के इंटरव्यूज लेने हैं, वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स पे सॉल्व कर रही है, उसके पास रियल टाइम प्रॉब्लम्स आती है। जैसे उसके पास एक प्रॉब्लम आया था कि एक एफएमसीजी थी, एफएमसीजी कंपनीज जो मार्केट में एंटर करना चाहती थी विद सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो वो सर्टेन प्रोडक्ट्स कैसा मार्केट में रोल प्ले करेगा, बिकॉज यहाँ पर रियल टाइम रिस्क लगे होते हैं, रियल टाइम वैल्यूज एसेट लगे होते हैं, लोगों का मेहनत लगा होता है। तो जब हम रियल टाइम प्रॉब्लम्स एड्रेस करते हैं तो हम मार्केट अंडरस्टैंडिंग को अपना बेटर करते हैं। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट पीपल टू गो थ्रू द वीडियोज ऑन यूट्यूब, बिकॉज देयर आर मेनी गुड यूट्यूब चैनल्स एक्चुअली गिविंग यू द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, लाइक थिंक स्कूल इज वन ऑफ देम, बेस्ट थिंक स्कूल। आदित्य शाइनी I would say he is also one of the best who provides the good business, because I have seen people, लोग मुझसे जब इंटरव्यूज के लिए पूछते थे कि आपसे क्या पूछा या what was your understanding, they only ask me कि अच्छा टेक में ये सब पूछा, हम ये सब पढ़ के चले जाए, हो जाएगा। मैंने बोला हाँ हो तो जाएगा, टेक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मोस्टली अगर इंटरव्यूअर को कम्युनिकेट करने का मन है आपसे, तो वो पूछ देगा कि जैसे मुझसे पूछा गया था कि हाउ यू थिंक यू डोंट गो इनटू मच टेक्निकल पार्ट बट यू टेल मी हाउ बैक रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क्स। सो मैं जितना यूजर एक्सपीरियंस को एनालाइज की थी, मेरा जो रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग था कि मैं जैसे देखती थी कि मेरे जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन क्लोथिंग पार्ट और आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स एसेसरीज, तो मुझे हमेशा उसी के एड्स आते थे। मैं सोचती थी यार इस टाइप के एड्स क्यों आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इट्स अ रोल प्लेड बाय डेटा साइंस ऑल्सो। मेरा यूजर एक्टिविटी ट्रैक हो रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट अंडरस्टैंडिंग में ये भी समझ में आता था कि नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ इंप्रेशंस क्या है, क्योंकि लोग यहाँ पर रियल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द मार्केट। राइट। और जैसे ऐसे इंटरव्यूज में गेस्टिमेट्स, कई स्टडीज, पजल्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो तुमने उन सब का प्रिपरेशंस कहाँ से किया था एंड हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर सच कंपनीज? Okay, so I will not say that I was pro in Guesstimates, because Guesstimates mostly जो non-technical parts के लिए prepare करते हैं, the companies like ZS mainly focus on Guesstimates, and even Practical also focus, even Practical के written round में question पूरा Guesstimate पे आता है, मतलब written में वहाँ पर आपको बस approach देना होता है। तो Guesstimates के लिए मैंने कुछ resources थे जो मैंने follow किए थे, जो resources I can give it to you and you can enlist in your channel, so I can give you that resources जो मैंने खुद के भी प्रिपेयर किए थे, खुद के नोट्स भी थे, और कुछ रिसोर्सेज जो ड्राइव्स और लिंक्स पे अवेलेबल होते हैं बट बहुत लोग रीच आउट नहीं कर पाते, बट सिंस यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब आई विल गिव यू दैट रिसोर्सेज एंड यू कैन इन्वेस्ट इन योर, दैट इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन। Yeah, it is very important. So there was a book on case point. जो case point, if I'm spelling it wrong or if I'm spelling it in the wrong way, but, pardon me for that. But I'll give you that resources and you can enlist in that in your channel. Right. So Nalini, since we have spoken a lot about data science and data analytics, having said that, हमने Python के बारे में बात किया, हमने SQL, R, we have talked about different libraries. So बच्चे generally ये questions पूछते हैं हमसे कि when they start preparing for certain things, वो लोग resources follow करते हैं, they follow a particular road map, एंड बीच में ये आ जाता है कि भैया ट्रेनिंग कहाँ से करे, इंटर्नशिप्स कहाँ से करे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करे और कहाँ से करे ये सब। सो what are your ideas about in data analytics, what are your ideas about trainings, projects and internships? Okay, so I would like to say that मैंने 0 rupees invest किया था, because mostly people get trapped in these courses and nowadays they are selling it on a very rigorous manner. So I don't support this, because knowledge is something which comes free. Right. So मैं इसीलिए first में mention की थी, do research, do save money. It's not about that you are rich or you are poor. It's all about how smart you are playing, how smart you are putting your things to make your resources more understandable to you. Because certain अगर I still remember मैंने एक कोर्स जो फॉलो किया था वो 24,000 का था, तो I can't afford it. I will be very honest. I don't want to afford it and I can't also. So मैंने बहुत सोचा कि how to get those resources available for me. But there is always alternatives available on internet, and YouTube is one of the best medium which is given to us. So at least you can develop your basic understandings about SQL, about Python. Basics तो सीख ही सकते हैं. This is for sure.
बेसिक्स अगर आप सीखना चाहो तो ज्ञान भर के है, बहुत अवेलेबल है, तो बेसिक सीख सकते हैं. बट इफ यू गेट सर्टेन ऑफर्स, लाइक हमारे टाइम पे पैंडेमिक था तो हमें कॉलेज वालों ने फ्री कोर्सेज ऑफ कोर्सेरा दे दिया था, तो हम उसमें फ्रीली एक्सेस कर पा रहे थे. दैट वाज अ लाइक अ गोल्डन ऑफर टू अस. बट इफ यू डोंट हैव दिस ऑफर, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. आई वुड सजेस्ट डेटा कैंप और डेटा समथिंग डेटा कैंप रिलेटेड. एसक्यूएल का 4 आवर्स का बिगनर्स कोर्स है, एंड that particular guy has explained SQL in a very good manner for beginners. मैंने भी वहीं से किया था. फ्रॉम ER डायग्राम कि ER डायग्राम को उसने बहुत लास्ट में एक्सप्लेन किया है, बट उसने डेटाबेसेस से जैसे स्टार्ट किया और टिल ER डायग्राम तक गया. दैट इज वेरी गुड. एंड फॉर पाइथन आई वुड सजेस्ट one can follow Code with Harry, or one can follow any good YouTuber. Anyone which is having good basic resources available for these languages is very good. फॉर प्रोजेक्ट्स आई वुड से, जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे अपने, और मैंने पहले भी बोला, एंड मेनी पीपल हैव दिस क्वेश्चन, कैन आई टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यूट्यूब और नॉट? यू कैन डेफिनेटली टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यूट्यूब. मैंने इवन बहुत लोगों का क्रिटिसिज्म भी देखा है ऑन अ वेरी रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन कि यार ये तो कॉपीड प्रोजेक्ट है. बट यू रिमेंबर यू आर अ फ्रेशर, नोबडी एक्सपेक्ट यू टू ब्रिंग इनोवेशन, एंड इफ यू कैन, जरूर लाओ यार, बिल्कुल लाओ. बट अगर नहीं ला पा रहे हो तो डर के नहीं करना है, ये एटीट्यूड तो रखो ही मत. इफ अ सर्टेन, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने एक ही कोविड एनालिसिस किया था, नंबर ऑफ पेशेंट्स वाला, जो कि यूट्यूब पे बहुत फ्रीली अवेलेबल था. आई अप्रिशिएट इट बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, to understand what a particular person is doing. So taking projects from YouTube is not a issue. And another thing I would suggest that people can do research and get some good projects on certain GitHub profiles. Like I got one very good project about movie recommendation system, which was done by some very good guy, and he mentioned on LinkedIn also about his project. It was his idea, but I really liked the idea because movie recommendation एक ऐसा चीज है, I am very bad in suggesting movies. So I was always like कि यार ये कैसे काम करता है. So people used to follow certain tricks like IMDb ratings and some other sites ratings. So my project involved that मैंने मूवी रिकमेंडेशन वेबसाइट, एक पर्टिकुलर वेबसाइट थी जो एक पर्टिकुलर मूवी रिकमेंडेशन देती थी. अब वो वेबसाइट टिकट्स भी सेल करती थी. अब वो टिकट सेलिंग के लिए कुछ मैनिपुलेटिव बिहेवियर फॉलो कर रही है कि नहीं, कर रही है कि नहीं, ये मैंने कैसे पता लगाया? कंपेयरिंग विद द अदर सेम मूवी के लिए अदर वेबसाइट जो रिकमेंडेशन दे रही है मूवी का, उनका क्या रेटिंग्स है. और ये जो यूजर, 2 तरह के रेटिंग्स होते थे हमेशा. एक वाज द यूजर रेटिंग एंड एक वाज द पैनल रेटिंग, कि पैनल ने क्या रेटिंग दी है मूवी को, और एक यूजर्स ने क्या रिकमेंडेशन दिया आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी. सो दीज थिंग्स इन्वॉल्व, एंड फिर मैंने इस बेसिस पे कंक्लूजन बनाया. दिस वाज माय डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट. सो या, वन कैन डू EDA projects also. Okay, Nalini. So before wrapping it up, any final tips which you want to give to our juniors who are watching this? Okay, so definitely I would like to say one thing for sure, that any role which they are looking for, whether it's SD or whether it is data analytics or whether it is data science or any role, even for core also, go through the job description, read what are the requirements, read what company is offering you with terms of, we mostly see for package, we mostly see for bond services, but you must see ki what job description is being offered to us, what will be our job profile, how we will be working on, and सबसे पहले कंपनी के विजन के को जरूर पढ़ के जाओ कि with what vision, because I mentioned in this video also that we are working on real time problems. It's not a easy task. यहाँ से जिंदगी के सही प्रॉब्लम्स, मतलब बोलते हैं ना, जिंदगी सरल नहीं है. यहाँ से रियल जर्नी शुरू हो रही है. सो ऑलवेज लुक फॉर समथिंग विच इज रियलिस्टिक इन नेचर. डोंट बी चाइल्डिश. डोंट, नाउ you are in your 4th year, you will be in your 4th year, you're sitting for placements. Definitely you are not a child of 1st year, so leave that childness nature. Enjoyment is very nice. Make friends. Friendship is very important because ultimately you are out of your home, out of your cocoons, and your friends will be the only one who will be taking care of, and friends will be the only one who will be the guiding forces for you. So yeah, my only suggestion will be always be careful and don't be childish. Yeah. So thanks a lot, Nalini. Thanks a lot for joining Placement Buddies. Hopefully, we will see you soon again in Placement Buddies with your interview experiences of Fractal and Tredence also. So thank you for giving us time. We wish you all the best in your future.
And thank you for calling me. It was a great pleasure talking about something I know little, more than little, or something which I really want to contribute to the society. And I'll give you the listed resources which can Yeah, help the yeah. juniors out. I'll put those in the video's description. Yeah.